જ છે ને. કઈ કરો બીજું, માઇક ઉપર હશે બીજું કઈ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Today we are doing class in English because some devotee here they don't understand Hindi. आज हम इंग्लिश में प्रवचन करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ भक्तगण हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती है, इसलिए हम इंग्लिश में प्रवचन देने का प्रयास करेंगे. So we are reading from Srimad Bhagavatam. तो हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं. Canto second कैंटो and text number 41. टेक्स्ट नंबर 41. सत्वं रजः तमः इति तिस्रः शुर नृ नारकः तत्रापि एकैकसः राजन् विद्यन्ते गतयः त्रिधा यदा एकैकतरः अन्यभ्यां स्वभावः उपहन्यते. सत्वं रजस्तम इति त्रिशः शुरनृनारकः तत्राप्यैकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्याम् स्वभाव उपहन्यते. सत्वं रजस्तम इति त्रिशः शुरनृनारकः तत्राप्यैकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्याम् स्वभाव उपहन्यते. Okay. माता जी
इंग्लिश लेके आओ, इंग्लिश। सत्वम, the mode of goodness, सत्वगुण। रजः, the mode of passion, तमः, the mode of darkness, इति, thus, इस प्रकार, तिस्रः, the three, सुरा, demigod, नृ, human being, नारकः, one who is suffering hellish conditions, नारकीय अवस्था में तत्र अपि, even there, एकैकशः, another, राजन, ओ किंग, विद्यन्ते, डिवाइड इनटू, मैं बांट देता है, गतयः, मोमेंट्स, त्रिधा, थ्री, यदा, एट दैट टाइम, एकैकतरः, one in relation with another, अन्याभ्याम, from the other, दूसरे से, स्वभावः, habit, स्वभाव, आदत, उपहन्यन्ते, develops, प्राप्त करता है। Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। ट्रांसलेशन तो सब हिंदी में तो सबके पास बुक है, सब पढ़ लेंगे, इंग्लिश में डायरेक्ट पढ़ता हूँ। According to the different modes of material nature, the mode of goodness, the mode of passion, and the mode of darkness, there are different living creatures
who are known as demigods, human beings, and hellish living entities. O king, even a particular mode of nature being mixed with with the other two is divided into three, and thus each kind of living creature is influenced by the other modes of and acquire its habit also. Purport. The living entities individually are being conducted by a particular mode of nature, but at the same time, there is every chance of their being influenced by other two. Generally, all conditioned soul in the material engagement are influenced by the mode of passion, because every one of them is trying to lord it over the material nature to fulfill his individual desire. But in spite of the individual mode of passion, there is always the chance of being influenced by the other modes of nature by association. If one is in good association, he can develop the mode of goodness, and if in the bad association, he may develop the mode of darkness or ignorance. Nothing is stereotype. One can change his habits by good or bad association, and one has to become intelligent enough to discriminate between good and bad. The base association is the service of the devotees of the Lord, and by that association, one can become the highest qualified man by the grace of the Lord's pure devotees. As we have already seen in the lives of Srila Narada Muni, he became the topmost devotee of the Lord simply by association of pure devotees of the Lord. By birth, he was the son of a maid servant and had no knowledge of his father and no academic education, even of the lowest status. But simply by associating with the devotees and by eating the remnants of their foodstuffs, he gradually developed the transcendental qualities of the devotees. By such association, his taste for chanting and hearing the transcendental glories of the Lord become prominent. And because the glories of the Lord are non different from the Lord, he got a direct association with the Lord by means of sound representation. Similarly, there is a life of Ajamil in 6th canto, who was the son of a Brahmana and was educated and trained properly in a discharge of the duties of the Brahmana. But who, in spite of all this, he contacted the bad association of a prostitute, was put into the path of the lowest quality of Chandala, or a lowest position for a human being. Therefore, the Bhagavatam always recommended the association of the Mahat, or the great soul, for opening the gates of salvation. To associate with the person engaged in lording it over a material world means to enter into the darkness region of the hell. One should try to raise himself by the association of the great soul. That is the way of the perfection of life. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadate Shvapadantikam Vandeham Shri Guru Shriyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagar Jatam Sahagra Raghunatamitam Tvam Sajivam Shadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagra Lalita Shri Vishakha Nidanscha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So here in this section of Srimad Bhagavatam, we are hearing from so many days that Sukdev Goswami is speaking to Parikshit Maharaj about creation.
सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्रिएशन के बारे में बता रहा है कि कैसे संसार का क्रिएशन होता है, सर्जन होता है। Okay. So Sukadeva Goswami analyzed everything and explained how different elements are created. तो सुखदेव गोस्वामी सभी तत्वों को अच्छे से समझ के उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझा, एनालिसिस की विश्लेषण किया। Okay. And then he compared this whole creation with the Lord universal form. और फिर वो ये जब तत्वों को कंपेयर कर रहे हैं, ये सब जो भगवान का विराट रूप है उनसे कंपेयर कर रहे हैं। So Lord have two features. तो भगवान के दो प्रकार के फीचर्स हैं। फीचर आप समझ सकते हैं क्या? One feature is his original spiritual form, Sachidanand Vigraha, Krishna. एक उनका ओरिजिनल फीचर है जो सच्चिदानंद विग्रह है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। And another feature of the Supreme Lord is his universal form. This is not permanent, this is temporary form. और दूसरा उनका है विराट रूप जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। So devotee like to worship spiritual form, not universal form. भक्त लोगों को भगवान के स्पिरिचुअल फॉर्म में ज्यादा रुचि है, हमारे तो ये आध्यात्मिक विराट रूप। Okay. Then the question may arise to us, why Lord create this whole universe? तो हमें ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने ये पूरा सृष्टि क्यों सृजन किया? Because we want to enjoy. क्योंकि हमें यहाँ पे भोग करना है। Actually, the enjoyer is only Sri Krishna. लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे भोक्ता सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। But we want to imitate Krishna. हमें भगवान से ऊपर जाना है, नकल करना चाहते हैं। हम उसकी कॉपी करना, नकल करना चाहते हैं। Therefore, to fulfill our desire, तो हमारे इच्छा को पूर्ण करने के लिए Lord Krishna created this all cosmic manifestation. इसलिए भगवान ने ये भौतिक संसार का सृजन किया। And living entity have so many desire. और मनुष्य और जीव को बहुत अलग-अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। Or there are different grades of living entity. और यहाँ पे भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवन हैं। Just like the main category is explained here 3. तो यहाँ पे 3 प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। First, the category of demigods. पहली कैटेगरी है देवता। Second category of human being. दूसरे मनुष्य की। And third is those who are the asuras, daityas. There are third category. तीसरी कैटेगरी है असुर, नारद के योगी। So all these 3 categories develop according to association of the 3 mode of material nature. ये 3 प्रकार की जो अलग-अलग दुनिया है वो दोनों के साथ संबंधित कार्य अलग-अलग है। Actually, the spirit soul is pure. पर जीवात्मा शुद्ध है। But by association, he developed particular type of quality of that nature. लेकिन उनके अलग-अलग संगों की प्रवृत्ति उनके साथ के कार्यों को अलग-अलग अपना एक नेचर बनाना। Just like we find that pure water. जैसे हम देखते हैं कि शुद्ध जल है। And if we mix some color in water, और हम उसमें कोई कलर मिलाते हैं शुद्ध जल के अंदर, then the water will take the quality of particular color. तो पानी जो जल है वो जो कलर उनका स्वभाव को ध्यान करेगा। And therefore the water become contaminated. और उसके कारण जल दूषित बन जाता है। Similarly, we are pure conscious soul. उसी प्रकार से मनुष्य या जीव एक शुद्ध चेतना है। But when we associate, our consciousness is covered by the mode of material nature. We develop different type of nature than original. लेकिन जब हम प्रकृति के गुणों के साथ संबंध करते हैं तो हमारा जो
अस्तित्व है वो प्रकृति हम जो प्रकृति को प्रकृति द्वारा बनाए गए गुण है उसको अपना कर रहे हैं. So here Lord described that there are different type of living entities. यहाँ पे भगवान दिखाते हैं कि अलग टाइप के मनुष्य अलग तरह की दुनिया है. All living entities develop according to different types of mixing of nature. और ये सभी के कारण है ये तीन गुण के साथ उनका संबंध मिश्रण के कारण. Okay. So not any gunas will remain pure in anyone. तो हम कभी नहीं देखेंगे कोई एक गुण एक मनुष्य में पूर्णतः मिले आपको मिलेंगे. The particular guna is always mixed with another two qualities. तो कम से कम एक जीव में आप दो गुण का जो मिक्सचर है वो मिलेगा. और ऐसा नहीं होगा कि वो जीव एक ही गुण रखेगा. The base material, the material mode of nature for living entity is rajoguna. सबके लिए कॉमन है जैसे सबके जो सबका पाएगा है जो सब जीव पाएगा वो है रजोगुण. Because all living entity become one to Lord. क्योंकि सब जीवों को प्रकृति के ऊपर अपना अस्तित्व जमाना. So when this rajoguna is mixed with another two gunas, then according to mixture it will develop different kind of nature. तो जब ये रजोगुण बाकी दो गुणों के साथ मिश्र होते हैं तब अलग प्रकार के एक स्वभाव उत्पन्न होते हैं. So Lord Krishna in Bhagavad Gita described in detail in 40th chapter of Bhagavad Gita. तो भगवद गीता में भगवान ने 14 डिटेल में समझाया गया है कि गुण एक दूसरे के साथ कैसे स्वभाव से कैसे बनते हैं. The another meaning of guna is rope. The another meaning of guna is rope. Rope means rassi. एक और गुण का एक मतलब ये भी होता है कि In Bengal, the rope is known as a guna. बंगाल में लोग जाओगे तो वो जो रस्सी होगी उसको गुण बोलेंगे. Okay, so we find the rope such a like three strings are there in rope. तो हम देखते हैं कि अगर हम बड़ी रस्सी लेंगे तो उसकी रस्सियों का मिश्रण करेंगे. And by mixing three string, the rope become more strong. तो ये जी रस्सियों को आप अच्छे से बांधो तो रस्सी को स्ट्रॉन्ग बनेगी. Similarly, the living entity is tied by three gunas. उसी प्रकार से सब जीव की गुणों से पकड़े बंधे हुए हैं. Okay, so Lord Krishna described in Bhagavad Gita that all living entity is bound by three mode of material nature. यही चीज भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताया है सारे जीव एक ही गुणों से बंधे हैं. So how we can identify which type of nature we are conducting? तो हम कैसे जान पाए कौन से टाइप का गुण हमारे अंदर है. So therefore we have to read Bhagavad Gita. तो इसलिए हम भगवद गीता पढ़ना चाहिए. Or for Bhagavad Gita we can find out which type of nature I am working. तो हम भगवद गीता से जान पाएंगे कि हम किस गुण में काम कर रहे हैं. Or what type of gun we have to acquire to free from this material world. तो हमको कौन से प्रकार के गुण अर्जित करने चाहिए जिससे हम ये भौतिक संसार से मुक्ति पा सकें. Okay, so here first Lord Krishna described the mode of goodness. तो यहाँ पर भगवान ने सत्वगुण के बारे में समझाया गया है. So the quality of Sattva-guna is, Lord Krishna said that it will pure. वो सूत्र देगा और सत्वगुण की बात में भगवान की जो उनकी गुण की क्वालिटी है समझाया गया है वो सूत्र है. Then the another quality of Sattva-guna is illumination. Illumination means prakash. And then it will make a person free from sinful activities. और सत्वगुण लोगों को पाप कर जीवन से मुक्त कर सकते हैं. So there are so many sinful activities. तो यहाँ पर बहुत सारे पाप प्रवृत्तियां हैं. But the hardcore sinful activities four. लेकिन जो चार प्रकार के जो चार प्रवृत्ति है जो बहुत सिंपल है या बहुत पापमय है वो है. First is to eat meat. पहला है मांस ग्रहण करना.
Then second is intoxication. दूसरा है नशा करना, Third is gambling. तीसरा है जुआ खेलना, And fourth is illicit sex. चौथा है स्त्री के साथ संपर्क। So these four are most hardcore activity. In Sanskrit it is called Mahapatak. इसको ये बहुत चार बहुत धर्म में बहुत कुछ टाइप के पाप है और इसको Patak. महापाप बताया गया है। Mahapatak. महापाप, In Sanskrit it is called Mahapatak. संस्कृत में इसको महापाप बताया गया है। So those who are want to advance in spiritual life, तो जिसको भक्तिमय जीवन में प्रगति करनी है, they must give up this four sinful activity. तो उनको ये चार पाप को छोड़ना ही पड़ेगा, Otherwise they will not advance in Krishna consciousness. नहीं तो वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। Just like when Srila Prabhupada is preaching in Western countries, जैसे प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार करने गए थे, one Christian priest asked Srila Prabhupada, "We are loving God." One Christian priest asked Srila Prabhupada, "We are loving God, you are loving God, then we are all good." तो भगवान प्रभुपाद जब लंदन में जब विश्व के पाश्चात्य देश में से एक चर्च में गए थे, तो चर्च के जो विश्व होता है, जो चर्च का Padri. पादरी होता है, उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि आप ही भगवान से प्रेम करते हैं, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। So Prabhupada then asked him, "Okay, if you love God, love means you have to follow whatever Lord said in His instruction." तो प्रभुपाद उस पादरी को कहा, अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो आपको भगवान जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। So, are you following Bible? तो आप बाइबल को फॉलो करते हैं? Yes, we are following. तो बाइबल का हम पालन करते हैं। So Prabhupada said that, okay, in Bible it is said that thou shalt not kill. बाइबल में सबसे पहली चीज ये है कि thou shalt not kill, मतलब आपको किसी को मारना नहीं चाहिए। Why are you killing so many animals? तो आप लोगों को इतने सारे प्राणी को क्यों हत्या कर रहे हैं? So they said that there is no soul in animal. तो वो बताता है कि प्राणी के अंदर जीव नहीं होता है। So Srila Prabhupada replied, "How you can say the soul, the animal have no soul?" तो प्रभुपाद ने कहा कि आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि जो प्राणी हैं उसमें जीव नहीं है? Just like you are eating, जैसे आप खा रहे हैं, आप ऐसा खा रहे हैं, animal is also eating. तो वैसे प्राणी खा रहे हैं, You are sleeping, आप सो रहे हैं, animal also sleeping. प्राणी भी सो रहे हैं। Are you producing child? आप संतान पैदा कर रहे हैं Animal also producing child. और वो भी संतान पैदा कर रहे हैं। Then what is the difference between you and animal? तो आप में और पशु में क्या अंतर है? So how can you say that animal have no soul? आप ये कैसे बता सकते हैं कि प्राणी में जीव नहीं है? So the priest replied that because the animal have no higher consciousness. तो उन्होंने पादरी ने बोला कि क्योंकि उन्होंने कुछ कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए उन चेतना नहीं है, इसलिए उन्होंने जीव ली। Okay, then Srila Prabhupada replied that okay, then the child have also not higher consciousness. तो प्रभुपाद ने उनका उत्तर दिया कि जो छोटे बच्चे हैं उसमें कुछ चेतना नहीं है, So therefore you can kill child and eat. तो आप क्या अपने बच्चों को मार के खाओगे? No, that I cannot do. तो पादरी ने कहा नहीं, वो तो आप नहीं करेंगे। Then why are you killing animal? तो प्रभुपाद ने कहा कि फिर आप क्यों पशु की हत्या करते हैं? Therefore, if you are killing animal, अगर आप पशु की हत्या करते हो, then you never understand God. तो आप कभी भगवान को समझ नहीं पाओगे। Because those who are sinful, they never understand what is the supreme personality of Godhead. तो जो भी पापी जीवन जी रहे हैं, वो कभी भगवान को उनका संपूर्ण से भगवान को जानने का नहीं। Therefore, the first step to understand Supreme Lord, इससे पहला कदम अगर आपको भगवान को जानना चाहते हो, then you have to simply give up the four sinful activities. ये चार पापी जीवन आपको ये चार तरह के पापी प्रवृत्ति है, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। Then you can understand what is God. तो आप समझ सकते हो कि भगवान क्या है। So, by following these four regulatory principles, ये चार नियम को पालन करते we will come in mode of goodness. हम सतगुरु में आ सकते हैं And gradually we can understand what is spirit soul. और फिर उस प्रकार से हम जीव और आत्मा क्या है उसे समझ सकते हैं। Those who are conducting their life such a way, जो अपना जीवन इस प्रकार से जीते हैं, they will develop in their habit the mode of goodness. उस प्रकार से वो अपने प्रवृत्ति में सतगुरु का ध्यान करेंगे। So therefore, in Krishna conscious movement, we are following four regulatory principles. इसलिए हम कृष्ण महापुरुष में ये चार नियम का पालन करते हैं। There are so many rules and regulations. बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस,
This all rules and regulation will help us to steady in mode of goodness. ये सारे नियम हमको सतर्क में रहने के लिए मदद करेंगे। Just like rising early in the morning जैसे सुबह जल्दी उठना and taking bath स्नान करना and wearing clean cloth शुद्ध कपड़े पहनना and only taking Krishna prasadam. और श्री कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। So this is the all activity it will keep us in mode of goodness. ये सब प्रवृत्तियां हमको सतर्क में रखेंगी। And Lord Krishna described the mode of passion. फिर भगवान को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। The mode of passion, the symptoms of mode of passion is unlimited desire, material desire. तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक से बड़ा गुण है सतर्क लोगों के पास अनलिमिटेड इच्छा है। And today we can find here in this modern society, people are generally conducted by this mode of passion. और यही इस समय में हम देख पा रहे हैं कि काफी लोगों में बहुत सारे लोगों में यही गुण पाया जाता है। And Srila Prabhupada in his purport described that how mode of passion is work. इसमें प्रभुपाद ने बताया है कि रजोगुण वो कैसे कार्य करता है। Just like here Srila Prabhupada write that the characteristic of mode of passion we can understand by just attraction between male and female. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि रजोगुण को हम समझना है तो पुरुष और स्त्री के बीच में अट्रैक्शन आकर्षण कैसे होता है। It is due to mode of passion. ये रजोगुण के कारण है। Srila Prabhupada write that woman has attraction for men and man has attraction for woman. प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्री को पुरुष के साथ आकर्षण है और पुरुष और स्त्री को पुरुष के साथ आकर्षण है और पुरुष और स्त्री के साथ। That is called the mode of passion. और उसको रजोगुण कहते हैं। Why? क्यों? In mode of goodness, you understand we are not his body, we are soul. उनके चित्रों में ये समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। But in mode of passion, you forget. लेकिन हम रजोगुण में भूल जाते हैं। Therefore, we thinking this is body. हम सोचते हैं कि हमारा शरीर है। I am body, his body. मैं शरीर हूँ, वो शरीर है। So let enjoy. तो मजा लगता है। हाँ, this is due to mode of passion. ये रजोगुण के कारण है। And another symptoms of mode of passion is to get honor in society. और दूसरा ये गुण है रजोगुण का कि सोसाइटी में Pratishtha honor, to get honor in society. And we find generally here in India, लेकिन हम बहुत ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। because to be honor, people are doing so much labor. प्रतिष्ठा के लिए लोग काफी सारी मेहनत कर रहे हैं। Just like not in West, but in India, mostly people are thinking that his child, he has a nice degree and nice job in America, then I am very honorable person in society. पाश्चात्य देश में से ज़्यादा धर्म पाया जाता है कि माता पिता है वो लगता है कि उनके पुत्र है वो बाहर जाए और डिग्री ले तो उनको लगता है कि उनके समाज में उनका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और उसके कारण लोग उनके बाबा भी करेंगे। Therefore, the parents always pushing their children, read, get nice degree, be engineer, be doctor. They are pushing. इससे हम भारत में पात्र नहीं है तो भारत को बोलते हैं बड़े डॉक्टर और अपना नाम का गर्व। So why? Because they want to be honored. ये क्यों है उसका मेन कारण है कि माता पिता को प्रतिष्ठा चाहिए। This is due to mode of passion. ये रजोगुण का एक It is Rajaguna. Then another symptoms of Rajaguna is hankering. और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक से हैंकरिंग घूमना। हैंकरिंग घूमना नहीं, हैंकरिंग हम लोग ज्यादा प्रलोभन होना, प्रलोभन ज्यादा, हैंकरिंग कुछ ज्यादा प्राप्त करने के लिए हैंकरिंग, लालच, लोभ बोलते हैं उसको। Okay, so we find here in society at present people are hankering so many material things. तो हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे चीजों के लोग Srila Prabhupada described here that a person want nice house, a person want nice house. जैसे प्रभुपाद ने बताया कि एक मनुष्य को अच्छा घर बनाना लोग होता है। Then nice wife, अच्छी बीवी, nice children, अच्छे बच्चे, and well settled bank balance. और बहुत अच्छा बैंक बैलेंस। He think that I am very happy. वो सोचता है कि मैं बहुत खुश हूँ। This is due to mode of passion. ये रजोगुण के कारण है। So this is another symptoms of Rajaguna. रजोगुण का एक और प्रकार है।
So those who are in mode of passion, they will never get liberation. तो ये जो रजोगुण है वो कभी उनको शांति नहीं मिलेगी। Because he is always busy to acquire more and more sense gratification. तो वो भौतिक चीजों के पीछे भागता रहेगा, उसको कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। So that is all Krishna described here. एक भगवान ने बताया है। Then and third, the modes of nature is tamoguna. तीसरा है नामगुण। And the symptoms of tamoguna is first, Krishna here described that the mode of ignorance. The first symptom is ignorance, means ajnana. सबसे पहला रजोगुण तमोगुण का स्वभाव है कि वो है अज्ञान का। What is ignorance? अज्ञान का क्या है? All people think that we are this body. सबको लगता है कि हम ये शरीर है। Srila Prabhupada described that three types of knowledge. श्रील प्रभुपाद ने बताया कि तीन टाइप के ज्ञान ज्ञान। The knowledge in mode of ignorance is such a like that. रजोगुण में इस स्वभाव इसका ऐसा है Knowledge, ज्ञान इस प्रकार का है ज्ञान इस प्रकार का है कि he saw that the body is the soul. लोग सोचते हैं कि शरीर ही है वही आत्मा। Just like in Christian world, जैसे क्रिश्चियन लोग सोचते हैं the soul is only in human being, वो सोचते हैं कि जीव सिर्फ मनुष्य शरीर में है and this human being have soul and animal have no soul, and therefore we can eat animal. जैसे मनुष्य में जीव है और पशु में जीव नहीं है, इसलिए हम पशु को मार सकते हैं। In previously in Christian society, they have such a thought that the woman have also no soul. वो क्रिश्चियन लोग पहले ये भी सोचते थे कि जो स्त्रियां हैं उनमें भी आत्मा है। But sometime after women protest, लेकिन जब स्त्रियों का प्रोटेस्ट बढ़ा, then Roman Catholic they passed a resolution तो रोमन कैथोलिक ने एक नया एक पास किया, समझ पास किया। now the women have soul, अभी बोलते हैं कि स्त्रियों में आत्मा है। so soul will enter in human body. इस प्रकार से आत्मा स्त्रियों के शरीर में प्रवेश किया। This is called mode of ignorance, इसको कहते हैं रजोगुण। tamoguna, because they have no idea of any soul. Therefore we see in Christian world, when a person die, they will brood inside earth. तो जैसे हम कहते हैं कि जो ईसाई है, जो क्रिश्चियन की जो संप्रदाय है, उसमें ऐसा है कि जब मृत्यु होता है तो वो शरीर को दफनाया जाता है। And they think that when the time of judgment will come, और जब जजमेंट आएगा, then those who are believing in God, तो जो भगवान में विश्वास करता है, they will all revive. वो सबको इससे बाहर निकाला जाएगा। Which body they will come? और उनकी कौन सा शरीर मिलेगा? They think that this is the soul, this body is the soul. उनको लगता है कि वो शरीर है वही आत्मा है। But this type of theology has so many problems. ये चीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। Just like if somebody old body, अगर किसका बुरा शरीर है, and when the time of judgment will come and Lord revive them, और जजमेंट के टाइम उनको फिर से बाहर निकाला गया and he remain always old, तो वो क्या पूरी चीज़ बुरा नहीं है? this is not very sane argument, sane logical. एक स्मार्ट इंटेलिजेंट एक बुद्धिशाली मत नहीं है, So this is called ignorance. तो उसको अज्ञान का बोलते हैं। Even though they are believing in God, वो फिर भी वो भगवान में विश्वास even if, फिर अगर वो भी भगवान में विश्वास करते हैं, फिर भी वो भगवान में विश्वास even if they are believing in God, अगर वो लोग भगवान में विश्वास करते हैं तो भी because they are in ignorance, तो फिर भी वो रजोगुण में या अज्ञानता में. Why? Because they have no information of soul. क्योंकि उनको आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं। So if they have no information of soul, then how they can know about God also? तो अगर उनको आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो वो भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? Therefore, if you ask any Christian who is God, तो हमको क्रिश्चियन को पूछना चाहिए कि भगवान कौन है? what they will answer? क्या जवाब देंगे? Are you know? आपको पता है What they will give answer? क्या बोलेंगे? God means light, something. वो बोलेंगे भगवान मतलब ज्योति है, सब कुछ ऐसा। So that is called ignorance. उसको क्या कहते हैं? In India also one category of spiritualist. भारत में भी आध्यात्मिक बाकी है, वो बोलते हैं They are known as Mayavadi. उनको मायावादी कहा जाता है।
they think that the Lord have no spiritual form. वो बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं। And when Lord descended in this material world, और जब भगवान यहाँ पे आके पहुंचे, then he acquired this form by the three mode of material nature. तो उनका भी शरीर जो दिखता है वो तीनों गुणों से विकसित होके बनता है। So this type of knowledge is also ignorance. इसको भी अज्ञान कहते हैं। So they are also tamoguni, वो भी तमोगुण है, because it's not pure knowledge. तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। So this is called first symptom of tamoguna is ignorance. ये पहला स्वभाव है तमोगुण। Then Krishna said that the another symptoms of tamoguna is madness. Madness, pagalpan. दूसरा स्वभाव है पागलपन। In Srimad Bhagavatam, Lord Rushabdeva instructed his son like that. यही चीज श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव पुत्रों को बताई। In one verse, he said that nonam pramatta kurute vikarma. जैसे कि ये श्लोक बताया गया है, मन प्रमाता Kurute vikarma. गुरुदेव की कर्म। Yat indriya priti avapnoti. Yat indriya priti avapnoti means that people become mad लोग पागल हो जाते हैं। for sense gratification. आत्मा इधर उधर के लोग पागल होते हैं। Nonam pramatta kurute vikarma. Vikarma means such activity which is not authorized by scripture. ये कर्म वो है जो शास्त्र में बताया गया नहीं है, उससे कार्य करना, उस प्रकार से कार्य करना। Everybody knows that stealing is bad. तो सबको पता है कि चोरी करना बुरा है। Still people are stealing. फिर भी वो चोरी करते हैं। Why? क्यों? Because he is mad. क्योंकि वो पागल है। Nonam pramatta. Pramatta means he become mad because of sense gratification. वो भोग के कारण पागल बन चुके हैं। So this is called ignorance. तो उसको हम अज्ञान करेंगे। So all living entity is bound by these three mode of material nature. सभी मनुष्य इसी टाइप के इसी प्रकार के गुणों से बंधन में हैं। So the question may be asked, how we can become free from the three mode of material nature? हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि हम इन गुणों से कैसे मुक्त हो सके। The answer is given in this purport by Srila Prabhupada. सिर्फ प्रभुपाद ने इसका जवाब इस तात्पर्य में दिया गया है। So the answer is by association. तो इसका जवाब है संग के साथ। In Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, same Rushabdeva speak another sloka. ऋषभदेव ने इसी बात के ऊपर और एक श्लोक बोले Maseva dvaram ahur vimuktesh. मत सेवा। The translation is like that. Maseva means serving to the devotees, महत सेवा मतलब भक्तों की सेवा करना। Mahatmas. महात्मा Serving to the devotees will open the door of liberation. भक्तों की सेवा करने से मुक्ति के द्वार खुलते हैं। Tamo dvaram yoshitam sangi sangam. The meaning is that tamo dvara. Tamo means ignorance. Those who associate with women or those who are attached with women. तो जो लोग स्त्रियों के संग में साथ है या उसके साथ उनके साथ ज्यादा बोलनी करते हैं। Tamo dvaram yoshitam sangi sangam means for such a person will open the door of ignorance, darkness. तो उनके अधिकार में दरवाजा खुलेगा। So what he has said, which type of association we have to keep ourselves. तो हमको ये सोचना है कि हमको कैसे टाइप के सामने रहना चाहिए। Just like those who are so much attached with sense gratification, those who are interested in sense gratification, he also becomes such like that. तो जो ज्यादा भोग के साथ में पड़ा रहता है तो उसी तरह करता है। And those who are associated with devotees, और जो भक्तों के साथ साथ करता है gradually he also become devotees. वो भी भक्त बनता है। So it is depend upon association. तो ये संग के डिपेंड करता है। And Sri Prabhupada ji give example of Narada Muni. प्रभुपाद ने यहाँ पे नारद मुनि का उल्लेख किया है। Narada Muni is, in his previous life is born as a maid servant son. नारद मुनि अपने पहले जीवन में दासी पुत्र थे। So Dasi Putra means maid servant is not good, such a good birth. तो दासी पुत्र का जन्म इतना अच्छा नहीं माना जाता है। Mostly in India. I don't know in West. आपको पाठशाला जैसे पता है In West is everyone is Dasi Putra. पाठशाला में सब दासी पुत्र ही हैं। Because no one knows his father. क्योंकि वहाँ जिसको अपने पहले बारे में Generally, I heard that. I don't see properly, but I heard such a like that. मुझे ऐसे पता नहीं है। Because everybody is marrying one time, second time, third time, fourth time,
5 times, I don't know. मास्टर जैसे लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार शादी करते हैं। One our Prabhuji, he is staying in America, हमारे एक प्रभु जी है जो अमेरिका में रहते हैं, and they completed their marriage 25 years. तो उन्होंने 25 साल में शादी की। 25 marriage anniversary they celebrated. तो उन्होंने 25 साल का अपने शादी का सालगिरह मनाया। So he invited so many friends for celebration. उन्होंने अपने मित्रों को सबको बुलाया। And one friend asked him, "Oh, you have only one wife? तो उनका दोस्त आश्चर्य हुआ, तो भाई साहब से एक How can you maintain this marriage for 25 years?" 25 साल की शादी कैसे निभा पाए? In India, everybody is maintaining. भारत में तो हर कोई एक ही साथ प्रत्येक साल अपना जीवन निभाता है। But in West, they are shocked. और वो मास्टर जैसे वो शॉक हो गए। Why? क्यों? Because there is no steady any family life there. वहाँ पे कोई फैमिली लाइफ नहीं है इसके कारण। So all children born from such a father, they are called Dasiputra. जो भी संतान है उत्पन्न होती है, In Gita, Krishna said it Varna Shankara. उसको भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा। So here Narada Muni is Dasiputra in his previous life, mid-servant boy. But in society he is not respected. But still, by chance, he get association of Bhaktivedanta Mahatmas. तो यहाँ पे नारद मुनि थे, काशी पुत्र थे, लेकिन वो अच्छे कोई ना अच्छा नहीं समाज में मानता था, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा के साथ संपर्क किए। So what happened? This Mahatma spent 4 months, 4 rainy season. एक बार क्या हुआ कि ये महात्मा ने 4 महीने बारिश के सीजन एक जगह पे गुजारे। In India, there are 4 months, 4 rain. भारत में 4 महीने बारिश होती है। 4 rain, 4 rain. Therefore, it is called Chaturmasha. तो उसको 4 महीने चतुर्मास बोला। So previously, the sannyasis, they are traveling by walking. पहले सन्यासी लोग थे, वो चलते जाते थे। So in rainy season, so sometimes the river will flooded and road is not such a good. Therefore, they stay in one place. तो बारिश में ये सब चलते जाते थे, लेकिन बारिश के कारण चलना मुमकिन नहीं होता था, इसलिए वो 4 महीने एक जगह पे रुकते थे। So they spent that 4 months in Narad Muni's mother's home. तो उन्होंने 4 महीने नारद मुनि की मां के घर में निकाले। So his mother, Narada mother, they are serving these devotees there. तो ये नारद की मां ये ऋषियों को सेवा करती थी। And Narad also joined him. और नारद के साथ सेवा करती। So gradually they hear from them about Srimad Bhagavatam. तो वो क्या करते थे, उससे भागवत और भगवत गीता का श्रवण करते। Or they are chanting, he is also hearing. और वो महात्मा लोग श्रवण करते थे, जब करते थे He is serving prasadam to the Mahatmas. महात्मा को प्रसाद वितरण करते। And sometimes he take remnant of this Mahatma also. और उनका बचा हुआ शेष उनको दान करते। So gradually Narad become purified. उसके कारण नारद मुनि भी शुद्ध हो गए। And Narad Muni get taste same as a person those Bhaktivedanta have for chanting of holy name. तो इसी प्रकार इस तरह से नारद मुनि को भी उसका रस कर गया, जो महात्मा जो श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे, उनका रस नारद मुनि को So similarly, just like 2-3 days before there is a COVID-19, 2-3 साल पहले. So everybody, those who associate with COVID patient, he also become infected with COVID-19. Therefore, people are keeping mask. So COVID is spread because of association with COVID patient. Similarly, if we associate with devotees, we also infected. Infected. संक्रमित. चीप लगेगा. तो how? Because by staying with devotee, by serving with devotees, gradually we are influenced by devotee. तो किस प्रकार से हम संपर्कित हो जाएंगे, किस तरह से हम उनके साथ सेवा करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो हम उनके साथ एक इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। Therefore, we also get the quality of devotee they have in us also. तो इसी तरह से जो भक्तों के गुण हैं वो हमारे अंदर विकसित हो जाएंगे। And then we become devotee. तो हम भक्त, उसके बाद हम भक्त बन जाएंगे। And our life becomes successful. इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
If we associate with non-devotees, अगर हम अपंग का संग करते हैं then we will become non-devotees. तो हम अपंग बनते हैं Same principle. वहाँ भी यही नियम लागू होता है Therefore, Srila Prabhupada said that devotee association, इसलिए प्रभुपाद ने भक्तों का संग का महत्व दिया है famous video clip of Srila Prabhupada in 1977 in Vrindavan, Srila Prabhupada said that 1977 में इसका प्रभाव निकला ने ये चीज बताई we want devotee association. हमको साधु संग मिलना चाहिए भक्त And मिलना चाहिए what we'll do in devotee association? हम भक्त संग में क्या करेंगे We will discuss about share market. क्या हम शेयर मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे No. नहीं We will discuss about Srimad Bhagavatam. हम श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे And by regularly associating with devotees and hearing Srimad Bhagavatam from devotees, तो उस प्रकार से हम नित्यम भागवत का सेवा करेंगे और भक्तों के साथ संग करेंगे we will develop more goodness. तो हमको सतोगुण का प्रभाव हमारे And then gradually also we transcend the mode of goodness तो हम सतोगुण के ऊपर चले जाएंगे and we will become situated in pure goodness. और हम शुद्ध सत्व में अपने आप को स्थापित करेंगे Pure goodness is the stage where there is no influence of Rajoguna and Tamoguna. शुद्ध सत्व में जहाँ पे रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है So this is the process. तो ये एक प्रक्रिया है So what we have to do? We have to associate. हमको क्या करना चाहिए हमको भक्तों का संग करना चाहिए There are two types of bhaktas. दो प्रकार के भक्त हैं One is Mahabhagavat, Purusha Bhagavat, एक है पुरुष भागवत and another is a Pustak Bhagavat, this book Bhagavat. और दूसरा है पुस्तक So two set. एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, एक भागवत भक्ति रस पात्र. एक भागवत means one Bhagavat is a devotee एक भागवत है and another Bhagavat is book Bhagavat. और दूसरा है भागवत पुस्तक So both Bhagavatas are important. बहुत ये दोनों बहुत जरूरी है Srila Prabhupada said that Nityam Bhagavata Sevaya. श्री प्रभु ने कहा था नित्य भागवत से So by serving those two Bhagavats, हम उनकी सेवा करें दोनों भागवत की सेवा करें so therefore we have to read regularly Srimad Bhagavatam also हमको श्रीमद् भागवत का नियम श्रवण करना चाहिए और पढ़ना चाहिए. पढ़ना चाहिए Yes, श्रवण पढ़ना. And regularly we have to serve devotee Bhagavat also. हमको महाभारत या भक्त भागवत की सेवा करनी चाहिए And then we become also Bhagavat. तो हम भी भगत बन सकते हैं So this simple formula and association that is very dangerous. तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है और आसान बहुत भयंकर है Just like Ajamil. इस अध्याय में कहानी बताई गई है Ajamil is pure Brahmana. अध्याय में शुद्ध ब्राह्मण थे But what happened? By chance he associate with some Sudras. लेकिन कारणवश कोई कारणवश वो शूद्र के साथ संगत काम कर ली And he is attracted by prostitute. और वो उनके साथ एक वेश्या के साथ संग पड़ गए And what happened? He married with prostitute. और उसके बाद क्या हुआ उन्होंने वेश्या के साथ शादी की And due to association of prostitute, और क्योंकि वेश्या के साथ उन्होंने संग किया था he become rogue, liar, वो झूठ बोलने लगे चोरी करने लगे and he become Chandal, just like Srila Prabhupada described here. और वो चंदा की तरफ गए So why such a pure Brahmana becomes such a low class person? तो ये शुद्ध ब्राह्मण चंदा के तरफ गए Because of association. संग के कारण So therefore we have to see which type of person we associate. हमको ये देखना चाहिए कि हम कौन से प्रकार के साथ संग कर रहे हैं कौन से प्रकार के मनुष्य के साथ संग कर रहे हैं One type of association elevates us, एक प्रकार का संग होगा जो हमें ऊपर ले जाएगा and one type of association will degrade us. और दूसरे प्रकार का संग को नीचे ले जाएगा We see Narad Modi is not such a high level person in his previous life. तो हम देखते हैं कि नारद मुनि उतने उच्च प्रकार के भक्त नहीं थे जन्म नहीं था उनका उच्च प्रकार. But by association he will elevated. लेकिन उनके संग के कारण वो बहुत अच्छा संग And Ajamil is born pure Brahmana. और वो ब्राह्मण बन गए Ajamil is born as a pure Brahmana, अचानक से वो ब्राह्मण का जन्म लिया but he become low class Chandal. लेकिन वो लोग के सुन रहे हैं Why? Because of association. क्यों संग के कारण So therefore, in Chaitanya Charitamrita it is said that sadhu sanga sarva shastra kahe, love matra sadhu sanga sarva siddhi hoy. ये जगह जगह में है साधु संग सर्विस में लोग मात्र साधु संग सर्व Love. This is not L-O-V-E, love. हेलो भी लव This love is famous in everywhere. ये लव फेमस है पूरी जगह में But this love means unit of time.
पर ये लव समय का एक एकम है, यूनिट है, जस्ट लाइक थर्ड पार्ट ऑफ 1 सेकंड। जैसे कि 1 सेकंड का एक तीसरा भाग, 1 सेकंड का तीसरा भाग, थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड। इफ यू एसोसिएट ओनली थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड विद डिवोटीज, अगर हम एक तिहाई पार्ट के सेकंड का पार्ट से भक्तों के साथ संग करें, सर्व सिद्धि होए, तो हमको सारी सिद्धि प्राप्त, ऑल परफेक्शन इन लाइफ, हमको सारी सिद्धि प्राप्त होगी। so we can understand how important is to associate with devotees। इससे हम समझ सकते हैं भक्तों का साथ महत्व है। Therefore, Srila Prabhupada said that even a person will read our one book, our one paragraph, one sentence, one word, his life is changed। इससे प्रभुपाद ने कहा है अगर हमारी पुस्तक को एक पुस्तक पढ़ना है, एक पेज पढ़ना है, एक श्लोक पढ़ना है, एक शब्द भी पढ़ना है, तो उसका जीवन सफल होता है। Why? Because of association। क्यों? संग के कारण। So therefore, Srila Prabhupada created this society, International Society for Krishna Consciousness। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था का स्थापना की। For what? Because devotee will associate। क्यों? कि वहाँ पे सब बात संग कर सके। Just like there are so many clubs, जैसे कि भाग जाओ तो बहुत सारे क्लब्स, cricket club, क्रिकेट का क्लब, where people will discuss about cricket। यहाँ पे लोग सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। The club of business person, बिजनेस लोग को बिजनेस करने का ये क्लब होगा, where people will discuss about how to increase their business। तो वहाँ पे लोग चर्चा करेंगे कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। Student club, स्टूडेंट का क्लब हो सकता है, where student will discuss how to get good mark in exam। वहाँ पे बच्चे डिस्कस कर सकते हैं कि परीक्षा में कैसे अच्छे गुण प्राप्त किए जाए। Similarly, we also need a club of devotees, यहाँ पे भी हम भक्तों का एक संग करते हैं, where we will do about hearing about Lord Krishna, chanting about his name, and gradually we will become pure devotee। यहाँ पे हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं और धीरे धीरे हम भगवान के अपने जीवन को उच्च रस की तरफ प्राप्त करते हैं। So we also need association of devotees। तो हमको भक्तों का संग चाहिए। So this temple is for association, ये मंदिर है वो सबके लिए बनाया गया है, where all devotees come together, यहाँ पे सारे भक्त साथ में आते हैं, they chant together, वो श्रवण को जप करते हैं, and they hear Srimad Bhagavatam। वो श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, They also eat Krishna Prasadam, कृष्ण प्रसाद खाते हैं, and by doing this process, automatically he become devotee। और ये प्रोसेस फॉलो करने पे वो अपने आप ही भक्त बन जाता है। And we will see if any new person, he will just come here and sit 1 month, 2 months, 3 months, he become devotee। तो हम देखते हैं कि कोई भी नया इंसान आता है, एक महीने 2 महीने 3 महीने वो भक्त बन जाता है। Why? Because of association। क्यों? संग के कारण। And he don't like to give up this association, और उनको कभी संग छोड़ने का मन नहीं करेगा, because in this step association, he become happy। क्योंकि वहाँ पे उसको खुशी मिलती है। And outside which step association we not get happiness, we got more miseries। और बाहर के जो संग मिलता है यहाँ आपको खुशी नहीं मिलती। So therefore, we have to associate with devotee, इसलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए। then we can change our nature also। हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं, We will get nature of devotee, हमको भक्तों का स्वभाव मिल सकता है, and we will give up our lording nature। और हम अपना प्रभावी का The nature of devotee is to become servant। भक्तों का स्वभाव क्या है? दास बनना। So every devotee want to become servant। सब भक्त दास बनते हैं, No devotee want to become master। कोई भक्त स्वामी नहीं बनना चाहता। Those who want to become master, he is not devotee। जो भक्त स्वामी बनना चाहता है वो कभी भी भक्त नहीं बनना। So by associating such a devotee who is servant, you also become servant। तो हम उस प्रकार के भक्तों का संग करेंगे जो दास है तो हम भी दास बन जाएंगे। Simple explanation here in Srimad Bhagavatam, here we can understand Srila Prabhupada write his purport that association is very important। यहाँ पे इसी पर प्रभुपाद इसका ही महत्व देते हैं कि संग करेंगे। Okay, Hare Krishna। हरे कृष्ण। Any question and comment, please? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट में बता सकते हैं। Okay, we are finishing here Srimad Bhagavatam। Srimad Bhagavatam की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।